Yes, Kalyan, we are ready to go. I'll I'll just paste the poem. It's in Hindi script, so oops, there's a character limit. Sorry. So let me just read it. Don't start the timer now. Just tell me. You've started the recording. Okay, fine. All right, guys. So this is the labor of love. So had a lot of introspection, and I also gave the topic for validation. um, मैंने ये झेला है because being an Indian passport holder, traveling 52 countries or 55, I would say, was not easy. And definitely, I had to exhaust 7 passports for that with 64 pages. And you can imagine the number of stamp. But falling off the passport rank is definitely a concern for me and should be a concern for you as well, because for the future generation it means that there would be less acceptance for studying abroad, less acceptance for work abroad, and so on. So मैंने ये जो जो नज्म है या पोएम है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी उर्दू मिक्स है. एंड मैं स्टार्ट करता हूँ. आई होप द रिकॉर्डिंग इज ऑन. इज इट ऑन? या ओके. सो इस पोएम का नाम है सरहदी दस्तावेज, यानी पासपोर्ट, बॉर्डर डॉक्यूमेंट्स. सरहदी दस्तावेज यानी पासपोर्ट. Okay. There would be some words that you can ask questions on. What does this word mean? And I'll be happy to answer. For the paucity of time, I will not explain each and every line, uh, because then it will take ages for us to understand. Okay, so let me start. कुछ इस कदर इसका वकार गिर रहा है जैसे पहाड़ों से कोई झरना उतर रहा. खड़ा हूं इंतजार में इस तरफ सरहद के, सोचता हूं मेरा आका ये क्या कर रहा. अब अशारों में बात ना बनेगी जलजला, इस मसले के खातिर अब दिमाग चला. अगर होना है महदूदों के पार तो बदलना होगा, तुझे अब दुनिया के तर्ज पर चलना होगा. लेकिन ये भी कैसे अब मुमकिन है, तेरे मुल्क में अब तरक्की साकिन है, काबिज है सब पर मजहब का खुमार, अक्लो इल्म से ज्यादातर बीमार. अब इस आलम में कौन दे ध्यान, अब इस आलम में कौन दे ध्यान, दस्तावेज ही तो है गोया. गिरने दो आज, फिर कभी लेंगे संज्ञान. अब दुनिया देखना मुश्किल है जब तक है इंसान, अब दुनिया देखना मुश्किल है जब तक है इंसान. खातिर गैर मुल्क जाने को अब होती खींचा तान. इस तरह मुल्क में परोसा है जैसे कड़वा पकवान. हर नजर को ये सोच है इस मुल्क में है सब शैतान. सैर सपाटा या पढ़ाई या फिर बस बनने मेहमान, इस सरहदी दस्तावेज ने किया सबको परेशान. विश्व गुरु के बाशिंदों की कैसी होती है पहचान. ऐ मेरे आका, क्या यही है तेरा नया हिंदुस्तान. अफसोस मेरा मुल्क मेरे होने पर हंसता है, अफसोस मेरा मुल्क मेरे होने पर हंसता है. वो कहता है सियासी इदारों से बदस्तूर मुझे यहां पैदा होना कोई गुनाह है, हर इंसान फंसता है. बशर्ते तू कोई सियासतदान है, बशर्ते तू कोई सियासतदान है, तभी ये मुल्क मानता तुझे इंसान है. वरना तू बस मेरी किताब में एक नंबर है. गलत फहमी है तुझे ये मुल्क तेरा घर है. तभी तो इस मुआशरे का हर मकान ठुकराता है, तभी तो इस मुआशरे का हर मकान ठुकराता है. दस्तावेज है पास तेरे पर वो काम ना आता है. मैं कतारों में खड़ा लिए दस्तावेज मेरा रश्क करता, मैं कतारों में खड़ा लिए दस्तावेज मेरा रश्क करता हूं. वो और लोग होंगे जो एक बार मरते हैं, मैं हर रोज मरता हूं.
बस एक तफरी की ही तो आदत है मुझको, बस एक तफरी की ही तो आदत है मुझको, और करना दुनिया भर में कारोबार है। इरादे मेरे हो कितने भी बुलंद, मगर मेरे सरकारी दस्तावेज लगते बेकार। दुनिया के कई मुल्क करते हैं ठिठोली, 64 पन्ने का ये एक नीला किताब है, जिसकी बस कौड़ियों के मोल लगती है बोली। 64 पन्नों का ये एक नीला किताब है, जिसकी बस कौड़ियों के मोल लगती है बोली। वैसे तो हर कोई मुल्क के नाम पर देता है नारा, वैसे तो हर कोई मुल्क के नाम पर देता है नारा, मगर मेरे भाई ये जो यही नीले किताब का है खेल सारा, मगर मेरे भाई यही नीले किताब का है खेल सारा। गर हो दम इसमें तो दुनिया तुम्हारा मैदान है, गर हो दम इसमें तो दुनिया तुम्हारा मैदान है, अगर न कोई बात हो तो हर वक्त करे ये किनारा। मेरे मुल्क में दोहरी राय पनपती है, एक तरफ है वतन परस्ती की कोई लहर, और किसी और तरफ अना की बारिश बरसती है। तेरे मेरे मुल्क के वजीर इस बात से वाकिफ है, तभी तो वो भी इसको नहीं अपनाते। मेरे मुल्क के वजीर इस बात से वाकिफ है, तभी तो वो भी इसको नहीं अपनाते हैं। अपने बच्चों को इस दस्तावेज से दूर रखते हैं, अपने बच्चों को इस दस्तावेज से दूर रखते हैं। तो फिर बताओ रहकर मुल्क में क्या करे, तो फिर बताओ रहकर मुल्क में क्या करे। बन जाए गैर मुल्की, अब यही सब दुआ करे, बन जाए गैर मुल्की, अब यही सब दुआ। So this is my point, and there are a lot of aspects that I wanted to cover over here. Like for example, our leaders, हमारे leaders के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो खुद इंडियन सिटीजन्स नहीं। पीयूष गोयल का बच्चा, एस जयशंकर जो लाल आंख दिखाता है, उनका बच्चा इंडियन सिटीजन नहीं। नारायण मूर्ति जो इंडियंस को 70 घंटे काम करने, और उसकी बेटी अमेरिकन सिटीजन है। तो बेसिकली nobody wants to be the owner of this blue book that we call as passport. And to be very frank, ये इंडियन मेंटालिटी है कि हमारा पासपोर्ट 64 पन्ने का, 128 पन्ने का होता है, क्योंकि हर जगह हमको स्टैंपिंग कराना पड़ता है। अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट हो तो आप 16 पन्ने का पासपोर्ट लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, and nobody will even ask you, nobody will even stamp you. फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद आज हमारा पासपोर्ट रैंक 148 पे है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को लाइन में साइड किया जाता है। आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स। it is a good thing that now I have UAE residency, so I'm looked at a different angle. But I remember the times when I was only an Indian citizen, not a resident of any other country, and I was going to countries like Italy, France, um, mm, Vietnam, even Vietnam, Eswatini, for example. Even that country was scrutinizing me. To give you a perspective, Botswana is a very small country in Africa. हमारे विश्व गुरु ने वहां पे कोविड के वैक्सीन फ्री में बांटे थे, बट हालत ये है कि इंडियंस को 14 दिन का स्क्रूटिनी करना पड़ता है उसके वीजा के लिए, और चाइनीज को फ्री एंट्री है, विच मीन्स दैट द प्रोपगेटर ऑफ द वायरस हैज अ रेड कार्पेट, but the provider of the vaccine is scrutinized completely. This is the status. I'm not talking about developed countries, okay? I'm talking about very underdeveloped countries. Namibia एक और कंट्री है अफ्रीका में, जहां पे वीजा मिलने को मुझे 25 दिन लगते हैं, and I have to pre-plan all my meetings and all my trips. I'm thankful to the cooperative clientele over there that 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 bears with this stupid rules and regulation that my passport has. If you look at countries like Europe, even bad. Schengen visa rejections are maximum
Last year, Indian citizens have lost 400 crores over rejections of Schengen visa. Understand that these are the money that has gone to the drain for rejections. If you talk about US visa, time. You will not get appointments for the next 8 months. Forget about getting a visa. You will not get appointments. You need to spend a fortune to get a earlier date, and that too, it is not guaranteed that you will get the visa or not. Especially if you are coming from Gujarat and you are a Patel or you are a Shah, you have had it. You will not get the visa. It is very clear. We have seen people from Gujarat changing their surnames from Patel to their village surname, Bhadaria, Vadodaria. They're changing their surnames. They're making court affidavits to change their surname from Patels to their village names so that they can bypass the US system. But all these for the fifth largest economy in the world. We are not ashamed of this. And I want people to be ashamed. Thank you.